to know about the imaginary numbers. Imaginary number. So a square root of any negative number is called imaginary number. And it is denoted by, iota. I means you can say iota. You can read iota. So see, iota basically a -1 root is equal to iota. Say root under -1 is the iota. So iota square will be -1, right? Now, can you say 1 by iota is equal to क्या थी? Can you say 1 by iota is equal to? Every number, let's आपने लिखता थे 1 by 1 plus root 2. So आपने इसको root 2 minus 1 लिखते थे, right? Root 2 minus 1. So we can't write like 1 by. So we need to convert it by the irrational number. This is a complex number. So complex number को आपको denominator में नहीं रखना होता. तो आप इसको क्या करेंगे? Rationalize करेंगे, right? So 1 by iota is equal to लिखना है, तो आप 1 by iota into iota से multiply and divide कर देंगे. तो iota upon iota square, that is -1. So get minus iota. So 1 by iota is minus iota. Clear है? So now iota cube is equal to minus iota, right? Iota square is -1, so iota cube is minus iota. Now iota power 4 is 1, right? Iota power 4 is 1. Clear है? Iota 4 is basically iota square का square, right? So iota square is -1, so -1 का square is 1. Now, if you find like iota power 25, can you say the iota power 25 is? Because iota power 4 is 1. So now you can write now iota power 4 power 6 into iota. So iota power 4 is 1. So 1 power 6 into iota, that is iota. So we need to remember important point here. We need to remember iota power 4n is equal to 1 if n belong to integer. It means कि iota power 4 is equal to 1, iota power 8 is equal to 1, and so iota power 12 equal to 1, like that. It means iota power 4n is equal to 1 if n is belong to integer. Now, second important result point. Second important is 1 iota plus iota square plus iota cube plus iota power 4 is equal to, can you say what? Kayathi, can you say answer for this question? Iota plus iota square plus iota cube plus iota power 4 is equal to? Sai, कैलकुलेट करके बताइए. Sai, everyone calculate and say the answer. Basically, iota is iota, right? Iota square is -1, and iota cube is minus iota, and iota 4 is 1. So the answer is 0. Yeah, 0. So we need to remember these things. Iota plus iota square plus iota power 4 is equal to 0, right? Got it? Now,
I am writing one question regarding this topic. Question is iota plus iota square plus iota cube plus up to iota power 2004 plus iota power 2005 plus iota power 2000 sorry 206 204 205 206 आपका इसका वैल्यू बताना है. Say the answer in 30 seconds. Within 30 seconds. You can say na iota power 5 is converted into iota. Iota power 6 is converted into iota. What? Can you say? Iota power 6 is converted into -1, right? Iota power 7 is converted into minus iota, right? And iota power 8 is converted into 1. So if you sum, get also 0. Iota power 5, iota power 6. Total thing is 0. Total thing is 0 सब. So इसी तरह आपको 4 पावर तक का आप जैसे आप आयोटा पावर 4 तक यहाँ पे सम करेंगे, इसका सम 0 हो जाएगा, राइट. फिर आयोटा 5 से लेके आप आयोटा 8 तक करेंगे, उसका भी सम 0. फिर आयोटा 9 से स्टार्ट करेंगे तो उस तरह 0. मतलब जो 4 के मल्टीपल्स होंगे वहां तक 0 आएंगे, राइट. गॉट इट. सो बोल सकते हैं कि आंसर इसका क्या होगा. देखिए अब आपको यहाँ फाइंड करना है 4 का मल्टीपल्स लास्ट डिजिट. आप इसमें बताइए, यहां तक 0 हो जाएगा वैल्यू बिकॉज मल्टीपल ऑफ 4, राइट. आयोटा पावर, राइट, iota plus iota square like that. So this is the basically iota power 204 multiples of 4. So now the इतना यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा 0. Now these things we need to calculate, right. Iota power 205 plus iota power 206. So basically iota power 204 into iota लिख सकते हैं. अब इसका वैल्यू क्या होगा. This is a multiple of 4, right, plus iota power 204 into iota square, right. So this is 1, also this is 1. So iota minus 1 is the answer for this question. Clear है. Clear है. Any doubt or any doubt. देख मैं वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. जैसे देखिए आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा. सेम. Now if you write iota power 5, so you can take a common iota power 4. So get iota plus iota square plus iota power 3 plus iota power 4. It means कि आप iota power 8 तक, इसका भी वैल्यू 0 तो 0 हो गया. इसी तरह हम जब लेंगे iota power 8 तक में, iota power आप 9 तो iota power 8 लेंगे कॉमन तो iota plus iota square plus iota क्यूब प्लस iota power 4. इस तरह से मतलब पेयर बनते जाएंगे जो कि पेयर कहां तक बनेंगे. आयोटा पावर लास्ट के आपको 4 का मल्टीपल लास्ट इसमें फाइंड करना है लास्ट में. सो 204 इज द मल्टीपल ऑफ 4, राइट. सो वहां तक के वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा. सो नाउ आयोटा पावर 205 प्लस आयोटा पावर 206 का वैल्यू करो. यू नो ना आयोटा पावर 4n इज इक्वल टू 1. n बिलोंग टू इंटीजर. क्लियर है. एनी डाउट. कयाती. Your name pronunciation is Kayati, right? Kayati. Yes, sir. Sir, I have a doubt. Okay, ask. Sir, you said iota power 4n is equals to 1, right? Yeah. Yes. Then how did you take it as 0 over here? I didn't 0. understand that. Iota plus iota square, iota cube value plus iota power 4 is saying 0. Oh, I'm okay. not saying this value is 0 now. You can see this. Okay. So if you only take iota power 4, iota power 8, that will be 0. No. I am saying our iota power, iota plus iota square plus iota cube plus iota power is equal to 0, right? And Yes, iota power 4 is equal to 1, iota power 8 is equal to also 1, iota power 12 is equal to also 1, right? Yes, sir. Multiple of 4 is equal to 1. So we can say, see,
बेसिकली आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 5 आयोटा 6, राइट, आयोटा 7, इसी तरह आपको अप टू आयोटा पावर 204 प्लस आयोटा पावर 205 प्लस आयोटा पावर 206 का वैल्यू फाइंड करना है, राइट। Yes, sir. तो आप यहाँ आप देखिए, इसको रिजल्ट अप्लाई कीजिए, आपको पता है कि आयोटा इतना का वैल्यू 0 होगा, व्हाट इट Yes, sir. 0. 0। अब इसमें आप अप टू यहाँ आयोटा पावर 8 लिखेंगे तो इसका वैल्यू भी 0 होगा, ये जो पेयर 4 का बनेगा 4 का, इसका भी वैल्यू 0 Yes. हो जाएगा ना। Yes. If you take iota power 4 is common, get iota plus iota square plus iota cube plus iota power 4. तो got it? तो इसका तो Yes, sir. वैल्यू 0 है, तो 0 into iota power 4 is 0. Got it? Yes, sir. Iota power Got it. visible. So similarly इसी तरह का पेयर बनेगा up to where? Up to this, right? Yes, देखिए sir. जैसे 4 का अब 4 है तो यहाँ पे इतना मिलके 0 दे रहा है, 8 है तो इस मिलके, so 8 204 is multiple of 4, so up to here get 0, right? So now Yes, sir. only हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, बस ये फालतू में दिया हुआ था क्वेश्चन फंसाने के लिए, राइट। Yes, only sir. thing is to calculate iota power 205 plus iota power 206, got it? So we know that Yes. iota power 4n is equal to 1. So basically iota power 4 into n is here 101 into iota, right? लिख सकते हैं ना Yes, iota sir. power 2 and plus iota power 4 into 101 into iota square. So आप इसका वैल्यू बता देंगे कि 1 होगा तो यहाँ से iota मिलेगा into iota plus यहाँ से iota square. So iota is iota plus iota square is -1. So get iota -1 is the answer. Clear है? Yes, sir. Okay. Now I'm saying, can you say the note point for the knowledge purpose? 3 plus 4 iota is greater than 2 minus 3 iota. This is correct statement or wrong statement? You can say, anyone? Can anyone say this is the right statement or wrong statement? 3 plus 4 iota is greater than 2 minus 3 iota. Anyone? Sir, I think it's less, sir. I think it's wrong. What? I think it's a wrong statement, sir. Yeah. Why? Because 3 plus 4 into -1 will give you -1. Not. This is not concept. Substitute I is equals to -1. Not. This is a not concept. Concept is here because 3 plus 4 iota, basically x coordinate is 3, y coordinate is 3, right? So if you plot in the graph, this is every complex number, you can't say the greater than or less than, because this is a point, basically not denoted like point 3 comma 4, 3 comma 4 something here, right? And 2 comma minus 3, 2 comma minus 3, it means this is a quadrant, second quadrant, right? So let 2 comma minus 3 2 comma fourth quadrant. So let's say this is a point. So we can't say ki greater or less or equal to. In the complex number we can't say ki greater hoga ya small, because it representing the x coordinate and y coordinate. This is not a number. Like complex number is definition is you cannot plot you cannot plot in the real number lines, right? Real number का definition में आता है ना कि we can plot in the number lines, that numbers is called real numbers, right? जैसे 2 को आप दिखा देते हैं 0 को यहाँ पे, तो 3 को आप 3.5 को दिखा देते हैं, आप √7 को दिखा देते हैं, √12 को दिखा देते हैं, इस तरह से. But we can't plot the numbers that is complex number in, because you can say, I will teach, don't worry about teach, every number, complex number in terms of x plus iota y, x plus iota y, where x is a real part, इसको बोलते हैं real part, और इसको बोलते हैं imaginary part.
imaginary part, and this is a real part. So every complex number is making like a real part and imaginary part. Iota is right. So z का मैंने उदाहरण 3 plus 4 iota, right? So 3 is the real part, 4 iota is the imaginary part, right? And z is equal to, let's say, 2 minus 3 iota, like. So you can say z is equal to 2. You can say this is a complex number, but imaginary part is 0. So you can say this is a purely real, right? Purely real complex number. And if you like say z is equal to 5 iota, right? So this is a purely imaginary number. You can say this is a purely imaginary number. इसमें रियल नहीं है, रियल पार्ट्स. सो दिस इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर. प्योरली इमेजिनरी नंबर कब कहेंगे? जब रियल पार्ट्स 0 हो जाएंगे तो प्योरली इमेजिनरी. एंड प्योरली रियल कब होगा? जब इमेजिनरी पार्ट्स 0. सो प्योरली रियल इज z is equal to 5. This is a purely real number. Real number. So here imaginary part is 0, right? Clear hai? So I am saying this is a meaningless, because this is a meaningless. Second, say 5 plus 7 iota greater than, if you are thinking greater than, so this is wrong. This is a meaningless, so we can't compare complex number. Okay, so this is a meaningless. We can't say greater or less or equal to. 3 minus 4 iota is greater than less than 8 plus 9 iota. This is also meaningless. Clear है? Concept is clear. In general मैं बोलूं, in general that p plus iota q is greater than a plus iota b. So this is also meaningless. We can't say greater than or less than. तो नोट पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए. नोट पॉइंट. So for imaginary number, order of reaction are not defined. For imaginary number, order of reaction are not defined. So clear hai? Concept is clear. Now I am giving the question regarding this concept, iota plus iota square. Can you say the question number first? Value of iota plus iota square plus iota power 3 plus like that up to iota power 10. Say the answer within the 30 seconds. Now second question is iota plus iota square plus iota cube plus up to iota power 105. Now third question is iota power n plus iota power 2n plus 1, n plus 1 plus iota power n plus 2 plus iota power n plus 3. इसका वैल्यू बताना है. Please everyone do that. Say the answer. Everyone try to do.
क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? साई, श्रीषा, you got the answer? Question number 1. Srisha, are you doing still? Kayati, are you doing? Sir, I got 0. Got 0. First question, right? Yes, sir. Not 0. I think not 0. Aditi, this answer for this question. Question number 1. Can you say the answer? Kathy, try once again. Sai, I am asking iota plus iota square plus iota cube like that up to iota power 10. So अभी तुम बताया ना iota plus iota square plus question number 1 solution iota cube plus iota power Sir, 4 0. not 0 plus iota power 8 plus iota 9 plus iota power 10. देखिए अप टू 8 तक 0 हो जाएगा, अप टू 8 तक 0 होगा इसका वैल्यू, राइट? अब हमें 10 तक बताना है ना, अप टू 10, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, राइट? सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बेसिकली आयोटा 9 प्लस आयोटा 10 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आयोटा 9 इज आयोटा, आयोटा पावर 8 इज 1, सो आयोटा एंड आयोटा पावर 10 इज -1, सो आयोटा -1 इज द आंसर। क्लियर है? आयोटा पावर 10 को क्या लिखेंगे? आयोटा पावर 8 इंटू आयोटा स्क्वायर, सो आयोटा पावर 8 इज 1 एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, सो गेट -1, आयोटा पावर 9 इज आयोटा। क्लियर है? आयोटा -1 इज द आंसर। Yes, sir. क्या आती? क्लियर है? साई, Yes, sir. साई, क्लियर। श्रीषा, ओके। Yes, sir. इसका आंसर बताइए फट से, डायरेक्टली बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। अप टू, इसका मतलब यहाँ आयोटा पावर 105 लिखा हुआ है, मतलब कि आपको 104 प्लस ऐसे है आपको, ठीक है? इसका मतलब ये है कि हम पूछ रहे हैं आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 6, सॉरी 5, like that up to iota power 104 इसका आंसर बताइए। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर 4 like that up to iota power 104 प्लस आयोटा पावर 105। इसका आंसर बताइए क्या आती? जस्ट इन 10 सेकेंड, इतना का वैल्यू कैन यू से आंसर? इतना का क्या हो जाएगा? इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 0, sir. या सो बचा Yes. क्या हुआ? आयोटा पावर 105, सो आयोटा पावर 105 इज बेसिकली आयोटा पावर 104 इंटू आयोटा पावर आयोटा, राइट? सो Yes, sir. आयोटा, सो इसका वैल्यू क्या होगा? आयोटा पावर 104 इज 1, राइट? इंटू आयोटा, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयोटा। आयोटा इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आयोटा पावर 105 ही का वैल्यू बस कैलकुलेट करना है ना, क्योंकि आयोटा पावर अप टू 104 इज 0, राइट? सो आयोटा पावर 105 इज इक्वल टू, यू कैन राइट ना, आयोटा पावर 104 इंटू आयोटा पावर 1, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4, सो 1 वैल्यू, राइट, इंटू आयोटा, दैट इज आयोटा इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। iota power n plus iota power n plus 1 plus iota power n plus 2 plus iota power n plus 3 का वैल्यू पूछा गया। आप इसका करके बताइए। श्रीषा, समझ में आ रहा है? श्रीषा, Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. ओके। आदिति, आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का। साई, आर यू डूइंग?
हाँ सर। Yeah. कितना आया आंसर? ठीक है, आयोटा पावर एन प्लस आयोटा पावर एन प्लस वन प्लस आयोटा पावर एन प्लस टू प्लस आयोटा पावर एन प्लस थ्री का वैल्यू आपको निकालना है, राइट। सो हम आयोटा पावर एन कॉमन ले लेते हैं, सो यहाँ से वन बचेगा, यहाँ से आयोटा बचेगा लेफ्ट, एंड यहाँ से आयोटा स्क्वायर प्लस हियर आयोटा पावर क्यूब। सो नाउ इफ यू कैलकुलेट दिस थिंग्स, that iota power n 1 plus iota square is basically minus 1 and iota cube is basically minus iota, so get 0, right? Get 0, 1 minus 1 iota minus iota, so iota power n into 0 is 0, so the 0 is the answer for third question. Aditi आया था? Kayati, you got the same answer? Yes, sir. Okay, now question number 4 कीजिए, डायरेक्टली बता दीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का without calculating within the 10 second. मल्टीपल है बेसिकली, आयोटा पावर 100 प्लस 1 इंटू आयोटा पावर 99 प्लस 1 आयोटा पावर 98 प्लस 1 इंटू, अब ऐसे ही इंटू जा रहा है अप टू आयोटा प्लस 1। आंसर बताइए कयाती, साई। यहाँ पे देखिए तो इससे पहले आयोटा प्लस 1 से पहले क्या आया होगा? आयोटा स्क्वायर प्लस 1 आया होगा। जब इसका आप कीजिएगा आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस 1 प्लस 1, ये 0 हो गया एक टर्म, तो इंटू सब 0, तो पूरा इसका आंसर क्या हो गया? 0। गॉट इट? या एनीवन को किसी का भी आप मान लीजिए कैलकुलेट करेंगे 90, वो भी क्लियर है? आयोटा स्क्वायर प्लस 1, आयोटा प्लस 1 से बिफोर आयोटा स्क्वायर प्लस 1 मल्टीपल होगा, आयोटा स्क्वायर इज बेसिकली माइनस 1, सो माइनस 1 प्लस 1 इज 0, सो 0 इंटू 0, सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 0। क्लियर है? नाउ Yes. आई एम okay, good. Now I'm writing one question that is asked in IIT. This is simple question. N equal to 1 to 3 summation n is equal to 1 to 3 iota power n plus iota power n plus 1, इसका आपको वैल्यू फाइंड करके बताना है। n इज इक्वल टू 1 से लेके और समेशन जो की है आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1, इसका आपको वैल्यू फाइंड करके बताना है। Everyone do that? No. Does it? There is a question. एक क्वेश्चन IIT में आया हुआ है।
Anyone got the answer? मैं ऑप्शन दो. We can say the option, which option is correct. मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ. Anyone can you say the which option is correct? Sir, Aditi? options. Yeah, very good. Who is Kayati or Srisha? Very good. Kayati, you say. आपने बताया ना आंसर? श्रीशा. Yes, sir. आदित्य आपसे आ गया सी ऑप्शन. हाँ सर. Yeah, same. Kayati, you got the answer. Iota power n is common ले लीजिए. So यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 1 प्लस और यहाँ से आपको आयोटा. बेसिकली आपको इसका समीकरण निकालना है. इस तरह से कन्वर्ट कर दिए. Iota power n is common, right? 1 plus iota is the constant term, so multiply. So now put the n is equal to 1, get 1 plus iota square plus iota cube plus like that up to iota power 12 plus iota power 13. Got it? इसका मैंने यहाँ पे 1 plus iota, right? We put n is equal to 1, get iota, get n is equal to 2 iota square up to iota power 13. So iota to iota 12 is 0, right? 0. Now only left is iota 13. Iota 13 value is basically iota, right? So 1 plus iota into iota is the answer. So if you multiply, get iota and plus iota square. So iota square is basically -1. So iota -1. So C option is the correct option. I think clear होगा. Any doubt? Now one more question. 1 plus minus iota power 4n plus 3, 1 minus iota. Please do that, everyone. आपका इसका वैल्यू फाइंड करना है. 1 प्लस माइनस आयोटा पावर 4n प्लस 3 इन ब्रैकेट इनटू 1 माइनस आयोटा. where n belong to integer, where n belong to integer. मैं ऑप्शन देता हूं, आप लोग बताइएगा which option is correct. A is 1, B is 2, C is iota, D is iota minus 1. Anyone got the answer? Lisa, which option is correct? Sir, doing. Yeah, very good. Everyone got the same answer? Yes, Sai? sir.
Sai, you got? Good, very good. Aditya. Sai, you got the answer? B option? Yes, sir. Very good. Kayati, you got? Yes, I got it. Good. So I don't need to discuss. Now, one more. This is very good question regarding the also combination of sequence series. We know not difference method. So I'm writing the question. The sequence S is equal to iota plus 2 iota square. Not iota square. This is 2 iota square plus 3 iota cube plus 4 iota power 4, like that up to 99 iota power 99. इसी तरह से up to 99 iota power 99 plus 100 into iota power 100. इसका वैल्यू बताना है आपको. थोड़े अच्छे से लिख लेते हैं. iota 99 iota power 99 plus 100 iota power 100. आपने अगर सीक्वेंस सीरीज में डिफरेंस मेथड पढ़ा होगा तो आप उससे कर सकते हैं. ट्राई कीजिए. iota plus 2 iota square plus 3 iota cube plus 4 iota power 4, like that up to 100 into iota power 100 का वैल्यू बता रहा है. Apply the difference method, you got the answer. सॉल्व करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. Aditi, you got the answer? Anyone? Which option is correct? Anyone say the answer? I think I need to discuss. So see. Anyone got the answer? Kayati, you got the answer? No, sir, I'm not getting it.
Okay, so see, I am solving. देखिए, आपको बेसिकली आपको क्या पता है, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर 4 जीरो होता है। इसका तो इस्तेमाल करना है इस तरह से। तो क्या हमारे पास हो सकते हैं जो कि हम इससे कर सकते हैं। सो इस तरह क्रिएट करने के लिए आप अगर सोचिए 2 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर किया जाएगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यू गॉट 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, अगर 3 आयोटा क्यूब माइनस 2 आयोटा क्यूब कीजिएगा तो यू गॉट द आयोटा क्यूब। सिमिलरली, क्लियर है। सो इस तरह को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप सोचिए। बेसिकली आपको इस सीक्वेंस को कन्वर्ट करना इस तरह के फॉर्म में, आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 5 लाइक दैट। सो आपको इससे देख के आपको अंदाजा लगना चाहिए कि आपको डिफरेंस मेथड अप्लाई करना है, डिफरेंस क्रिएट करना है ताकि आप इस तरह के ला सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोचिए, आयोटा तो है यहाँ पे, आप आयोटा स्क्वायर लाना है। तो अगर मैं या तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए इसी सेम चीज को मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करके लिखूं और एक छोड़ के लिखूं इन प्लेस आयोटा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आयोटा स्क्वायर। मैं आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा में आयोटा स्क्वायर, बट एक प्लेस छोड़ दिया आयोटा के सामने। अब मैंने 2 आयोटा स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया आयोटा से तो गेट 2 आयोटा क्यूब। सिमिलरली 3 आयोटा क्यूब में 3 आयोटा पावर 4 लाइक दैट आपको मिलेगा, राइट। इफ यू 99 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 98 आयोटा पावर 99, एंड 100 पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मिलेगा 99 आयोटा पावर 100। और एक एक्स्ट्रा जब आप यहाँ से छोड़े तो एक छोड़ के लिखे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिलेगा जो कि 100 पावर 100 इंटू आयोटा पावर 101, जब इसमें मल्टीप्लाई होगा आयोटा से। तो मतलब कि क्या है कि मैं एवरी टर्म में आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट, एवरी टर्म में। गॉट इट। तो Yes. इस गॉट इट। नाउ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा एस कॉमन 1 माइनस आयोटा एलएचएस, राइट। लेफ्ट हैंड साइड गेट आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर 4 लाइक दैट मिलेगा। एंड 100 आपको मिलेगा कितना तक, आयोटा पावर 10 प्लस आयोटा आपको यहाँ तक आयोटा पावर 101 मिलेगा 100। देखिए 900 आयोटा पावर 100 99। अब आपको एक्स्ट्रा की जो है ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 100 आयोटा पावर 101। गॉट इट। मैंने सब्ट्रैक्ट किया वाले। तो अब बताइए कि 1 यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है, क्लियर हाँ है। सर। तो हमारा लेफ्ट क्या बचा, ए पार्ट। और यहाँ से है एस इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस 100 आयोटा पावर 101। यू कैन राइट आयोटा, गॉट इट। 10 आयोटा पावर 101 you can write iota power 4 into 25 into iota, so get iota। क्लियर है। सो नाउ एस हमको एस बताना है, बेसिकली एस का वैल्यू बताना है। सो गेट माइनस 100 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। सो मैंने पहले क्या बोला था, पहली बार में क्या बोला कि आपको कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं रखना है। सो वी नीड टू रेशनलाइज। सो एस इज इक्वल टू, रेशनलाइज कर दीजिए आयोटा। सो मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस आयोटा एंड डिवाइड विथ 1 प्लस आयोटा। सो 1 माइनस आयोटा into 1 plus iota. Now minus 100 into iota, that is minus 100 रहने दीजिए। iota is iota into 1 plus iota square is minus 1. Got it? And now 1 is a minus b into a plus b, a square minus b square. So 1 square minus iota square. Minus iota square is minus 1. So minus minus plus. So 1. Got it? So now minus 50 times iota minus 1. So get 50 into 1 minus iota. 50 into 1 minus iota is the answer. So which option is correct? 50 into 1 minus iota. I think A option is correct, right? So A is the correct option for this question. Clear? Yes, sir.
सो आपको अब अगर मैं सीक्वेंस सीरीज में भी ऐसे इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो आप कर लेंगे सीक्वेंस सीरीज में। आप बेसिकली दिस इज ए क्वेश्चन मिक्स विद सीक्वेंस सीरीज एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। पहला आइडिया तो आपको सीक्वेंस सीरीज का ही है, डिफरेंस मेथड आपने पढ़ा होगा सीक्वेंस सीरीज में। हाँ सर। या सो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्लियर है ना। रियल पार्ट किसको बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। हाँ x सर। is the real part and y is the imaginary part, clear है। so one question is the real, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस पर जितने टाइप्स के क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करता हूँ, राइट। तो मतलब बेसिकली ताकि आपका कॉन्सेप्ट, देन आई विल टीच कॉन्सेप्ट देन क्वेश्चन इन मैथ्स, यू नो ना, सर कॉन्सेप्ट क्लास एंड कितने बजे तक है? 9:50। ओके सर। मैं एंड कर दूं क्या, प्रॉब्लम है क्या आप लोग नहीं को सर, सोना। बस पूछ रही थी। ओके, नो इशू। 9:59 आई थिंक 9:52 में स्टार्ट हुआ, राइट। सो 1 आवर, 1 आवर क्लास इज 1 आवर। सो आपको इसका बताना आंसर, द रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा पावर 50। And also you can say the imaginary part or real part। 1 प्लस आयोटा पावर 50 का रियल पार्ट्स क्या होगा, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ए ऑप्शन इज 1, बी इज आयोटा, सी इज 0, डी इज none of these। ट्राई टू डू। देखिए, आप इसका पावर जब निकालने जाएंगे इस तरह से तो आप नहीं कर पाएंगे फाइंड आउट। सो इसके करने का तरीका मैं एक बता देता हूँ, आप लोग फिर कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स आप अगर लगाना वो भी चाह रहे होंगे, अप्लाई करना चाहेंगे बाइनोमियल थ्योरम, फिर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके कुछ कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पहले नंबर 1 प्लस आयोटा है, इसको पावर 2 लिखिए और इसके पावर 25 लिख दीजिए। अब इससे होगा क्या, आपको बेनिफिट क्या मिला कि अब जब इसका स्क्वायर निकालेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर, सो गेट a1 प्लस 2ab, दैट इज 2 आयोटा, एंड आयोटा स्क्वायर इज -1 के पावर 25। सो देखिए -1 कैंसिल हो गया। अब बेसिकली 2 आयोटा के पावर 25 है। सो गेट 2 पावर 25 into iota power 25, that is 2 power 25 into iota। so this is the number basically। so you can see now, only is the imaginary part, so real part is equal to 0, so option C is the correct for this question। clear है, real part is 0 and imaginary part is basically 2 power 25। clear है ना। मैं Yes. आप लोग के लिए क्वेश्चन देता हूँ, सेम टाइप के क्वेश्चन। मैंने बाइनोमियल थ्योरम में भी इस तरह के क्वेश्चन कराए थे, बट वहां पे नंबर्स थे, रियल नंबर्स। यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का लेकर कराता हूँ। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा पावर 6 प्लस 1 माइनस आयोटा पावर 6, इसकी वैल्यू बतानी है। आप मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट बताया, स्क्वायर करना है उसके फिर पावर लिखने हैं, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप बनाइए, हो जाएगा। फाइंड करके बताइए आंसर। ऑप्शन ऐड कर देता हूँ। ए इज आयोटा, बी इज 0, सी इज 1, डी इज 2। apply previous concept
You got the answer. प्रीवियस कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, 1 प्लस आयोटा पावर 50 है, तो पहले आपने क्या किया, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर उसके पावर 25 कर दिया, राइट। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए, 1 प्लस आयोटा के स्क्वायर पावर 3 कर दिया, 1 प्लस आयोटा के स्क्वायर के पावर 3, एंड सिमिलरली 1 माइनस आयोटा के स्क्वायर के पावर 3, आप उसको कीजिए। Anyone got the answer? क्या थी, कौन सा ऑप्शन सही है? 1 minute, sir. ओके, डू दैट। So 0. Yeah, very good. So 0. Yeah, very good. Correct. Everyone got? I think I need no need to discuss. Kayati, Yes, sir. you also say the answer. No need to discuss now. I said 0, sir. Yeah. Yeah, good. One more question. The value of iota power 592 plus iota power 590 plus iota power 588 plus iota power 586 plus iota power 584 upon iota power 582 plus iota power 580 plus iota power 578 plus iota power 576 plus iota power 574, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। आपको ऑप्शन देता हूँ, ए ऑप्शन 2, बी इज -2, सी इज 1, डी इज आयोटा। Got the answer? Anyone? Aditi, are you doing? Srisa, Yes, sir. are you doing? Yeah, sir. Good. Don't worry. These two question is homework question.
we can do. I will discuss in next class. See this question also in the homework.